हाय गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक मॉर्निंग। अपडेट दे दूं। आप में से ज्यादातर लोग सब जानते हैं वंडला हॉलीडेज के बारे में, पर इस समय तीन पार्क्स हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची। और एक बेंगलुरु में पार्क के साथ वो रिजॉर्ट भी एक कंपनी ओन करती है, रन करती है। तो लास्ट एक बार फाइनेंशियल दिखाएंगे स्क्रीन पे, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद आई डाउट हमारी अरुण जी से बातचीत हुई। गजब के नंबर्स इस क्वार्टर में, Q1 में इस कंपनी ने डिलीवर करे। ईयर ऑन ईयर खैर कंपैरिजन करना गलत है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो रेवेन्यूज, जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो इबीटा के आंकड़े थे, अब तक के हिस्टोरिकल हाईस पे पहुंचते हुए नजर आए। तो अरुण सर, ये साल दर साल कंपैरिजन गलत हो गए, क्योंकि हम एक लॉकडाउन फेज से फुली अनलॉक के फेज को एंजॉय कर रहे थे। पर इवन सीक्वेंशली नंबर्स अच्छे। इस नंबर्स के इंटरनल समझाइए। Q1 में फुटफॉल्स कैसे रहे, और उन फुटफॉल्स को एक पर्सपेक्टिव में रखें क्या। 2019 का जो Q1 था, उसके कंपैरिजन में फुटफॉल्स कहां पे आके खड़े हुए हैं, कितना इंप्रूव हो पाए, वो असल तस्वीर क्या है। Thank you for having me on the show. As you know, it's our first summer since the pandemic started, so we had missed almost 2 summers of footfalls and revenues. So it's very heartening to see that our footfalls and revenues both have, bounced back very strong. And we have done roughly about 25-30% better than pre-pandemic, which I think is a very heartening news. And there is a lot of latent demand in the market, all the markets that we are in. So we are expecting that to continue for the remainder of the year and maybe next year also. So I think there's a lot of latent demand. So that probably explains why we got these kind of numbers. Has reported highest ever. So the company has reported highest ever quarterly footfalls, revenues, EBITDA, PAT in Q1. So how far has that business momentum sustained in Q2, sir, till date? No, I think we will sustain it for the, like I said, for the remainder of the year, because I think demand is strong. Of course, weather and all these other factors also play a role. So we do run a seasonal business. So in that sense, whenever there is rain and schools and colleges reopen, you will see a footfall decline. So that we are expecting that, and we are already seeing some of it. But having said that, footfalls still remain to be very strong. And we are hoping that in the next festive season, which is September onwards, I think we should see again demand peaking. And so I think it's shaping out to be a very exciting and a good year for Wonderla. ओके सर, ये जो स्थितियां अरुण जी पहले से अच्छी हुई हैं, डिमांड काफी स्ट्रांग है, फुटफॉल्स काफी स्ट्रांग है, क्या ये इसने, जैसे हमने होटल इंडस्ट्री के गेट में देखा कि टैरिफ्स बहुत ऊपर चले गए हैं, सब्सटेंशियली हाई चले गए हैं, आप लोग इस बीच में कितना प्राइस हाइक ले पाए हैं और हायर लेवल्स पर डिमांड कितनी स्ट्रांग है? As it stands, our blended ARPU is roughly about around 3 to 4% higher than compared to pre-pandemic levels. That's because we have done a lot of offers and promotions for footfalls to come back. Now, since the footfalls have come back, we have reduced our discounts and other offerings, and have actually improved our pricing or increased our pricing by roughly another 10%. So you can see the effect of that also coming in this quarter onwards. Because we wanted to make sure that when our parks are full, our revenue potential also is maximum. The yield is also maximum. So we have raised prices about 2-3 times this financial year already, and I think now we will be trending roughly about 10-12% compared higher than pre-pandemic. ओके, तो ये बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट आप देखें तो डिस्काउंट्स वगैरह जो थे वो खत्म, और अब 10 to 12% अगर आप देखें इंप्रूव प्राइसिंग पर, आप देखें टिकट्स आ रहे हैं। अच्छा अरुण जी, एक और चीज़ है कि पैंडेमिक के दौर में ये क्वाइट बहुत हद तक अगर आप देखें पॉसिबल था, ऑब्वियस था कि सभी ने अपने आप को अगर आप देखें ट्रिम किया था, आपने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को अगर आप देखें ट्रिम किया था। बट अब जब स्थितियां काफ़ी अच्छी खासी हैं, फुटफॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप 10 to 12% का प्राइस हाइक ले पा रहे हैं, आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे कैसे लौट रहे हैं, और यहां से लेके लगभग अगले 2 साल का CY 24-25 तक के अंत तक आपके एक्सपेंशन प्लान कितने कंप्लीट हो जाएंगे, कितनी कैपेसिटी और आ जाएगी आपकी? So we have 2 projects that we had put on hold during the pandemic. We had a large amusement park project in Chennai, roughly about 400 crores, out of which 100 crores has already been invested in land.
So we are, starting to revive that project, and we are, going back to the discussion with the Tamil Nadu government, and I think we should be able to resolve any outstanding issues fairly quickly, and we hope to start work on that project. So it has been delayed multiple times. We have one more project which is in Orissa, a small asset-light model which we are doing with the help of Orissa government, and they have already allotted land to us, and they've been very proactive. They've been literally, chasing us to start this project. So we are doing that also. So next financial year we will have two projects which we will be starting work on simultaneously. So that's the way it's looking right now. So we will start Chennai and Bhubaneswar projects. So we should hope to finish them in about 2 to 2.5 years from now, and it will start generating revenue. तो अब भाई हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु के बाद चेन्नई और भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में भी आपको वंडरला हॉलिडेज के पार्क नजर आएंगे। अरुण जी, जाते जाते कुछ और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग ऐसे अटकलें लगती रहती हैं, तो ऐसा कोई और तो परस्यू नहीं कर रहा है इन दोनों के अलावा? अरे ये भोपाल आने का मन नहीं है क्या? अरुण जी फ्रीज बोले मैं ऐसी मैं तो ऐसी मना कर रहा था, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर बन रहा था भोपाल का ना। आगे अरुण जी सॉरी, आप फ्रीज हो गए थे। सॉरी, yeah, there was a connection problem. I missed your question. तो सवाल ये था अरुण जी कि ये जो दो नए पार्क्स की आपने बात करी जिस पे आप शुरू करोगे, चेन्नई और भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में मेरे ख्याल से वो लैंड अलॉट हुई है, इसके अलावा भी कुछ परस्यू कर रहे हो? कुछ कहा जाता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग सीख कर रहे हो, ऐसी कोई बातचीत किसी के साथ? और ऐसे ही मैं पूछ रहा था भोपाल आने का मन? Yeah, so we are talking to the various parties in different state governments to see whether we can, do projects. So right now it looks like we are going to be busy for the next 2 years, but definitely we will be more aggressive in terms of, starting new projects. The advantage of going with governments, I think most governments recognize the need for having social infrastructure like amusement parks around large cities. So I think that awareness has come to a lot of governments, and this creates permanent employment to more than 1,000 people per location. And so those things are attractive to a lot of governments, and this is non-polluting industry. So anyway, so because of all that, we have invitations from various governments to set up this park, and we are looking at all of these proposals, and as and when we finalize, we will definitely keep you posted, and hopefully we'll come to Bhopal as well. So that's the hope. Yes. लखनऊ, रायबरेली, फिर बोलेंगे नोएडा क्यों नहीं? अरुण जी बहुत ऑप्शन है हमारे पास। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हम अपडेट देखो, सीएम साहब देख रहे हो कितना बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर भोपाल का, एमपी का। नहीं, वो लैंड बहुत है, लखनऊ रैली बीच में खूब जमीन है। ये अपना शुरू होने में अपने भोपाल की सेटिंग कर रहा था। मैं अपनी सेटिंग करूंगा, सबको करना चाहिए वैसे। ठीक है भाई, वंडरला बड़ी, ये जो अच्छा मूव देखा ना वंडरला, ये तो खैर बातचीत में, इससे पहले का चलो लंबा चार्ट दिखाएंगे क्या? तो वंडरला अपने रिजल्ट्स में बहुत शार्प रिएक्शन दिया था, बहुत अच्छे नंबर्स। तो सोचा मैनेजमेंट जी क्यों ना बात करी जाए हॉलीडेज के बीच भी। ये देखिए हटा है ये स्टॉक, उन रिजल्ट्स के बाद की कहानी है ये। चलिए भाई, अब सवाल दिखाइए वीरू का।